Everybody knows Albert Einstein for his theory of relativity and the Nobel Prize he won for it. He also... What? I didn't win the Nobel Prize for relativity. I won it for explaining the photoelectric effect. Right, of course, sorry. Einstein won the Nobel Prize for his work on the photoelectric effect, which helped settle the age-old debate of what light is made of. So, what is it? Okay, let's rewind a little. Newton had thought light was made of particles, and his rival Hooke had thought it was a wave. And when technology advanced enough, some experiments proved Hooke was right. That proof, and Maxwell's equations describing light's behavior as a wave, made the debate die down, until the photoelectric effect was discovered. When light hits a cable next to another cable, electrons jump from one to the other. It was thought it happened because waves of light made atoms vibrate until they ejected an electron. But when it was measured carefully, a big contradiction was found. It only happened for light of some wavelengths. For others, no electrons jumped at all. Einstein was bewildered. The photoelectric effect should work regardless of the type of light. If light wasn't made of particles, and now it turned out that it couldn't be made of waves, what was it made of? After much reflection, he formulated a new hypothesis combining the two previous ones. What if light were made not of waves or particles, but of both? That is, what if light were made of wave packets? That concept, which we now call photons, allowed Einstein to write out equations that explain the photoelectric effect in 1905. This consolidated the idea that light can sometimes be described as a wave, sometimes as a particle, and sometimes as either. It was a revolutionary view, and it opened the field for quantum physics. Robert A. Millikan, an American experimental physicist, was unconvinced by Einstein's conclusions, so he set out to prove him wrong by carefully measuring the photoelectric effect. However, years later, Millikan ended up proving Einstein right, and they were both awarded the Nobel Prize in Physics. You see this setup on the screen? This is meant for an experimental study of the photoelectric effect. I hope you have some idea of the photoelectric effect. Now, as you can see, it has an evacuated glass or a quartz tube having a photosensitive plate. Let me label it as C. Now, this is known as emitter. And there is another metal plate A, which is known as the collector. Now, as you can see, the emitter and collector are attached to a battery that maintains potential difference between the plates. And you see that? There's a small window that opens up into the glass tube. It's a transparent quartz window, which permits ultraviolet radiation to pass through it and irradiate the emitter. Now, monochromatic light from a source of a sufficiently short wavelength passes through this window and falls on the photosensitive plate, that is C. Now, because of photoelectric effect, the electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A, which, as I told you, is known as a collector. And why does it happen? By the electric field created by the battery. Now, when the collector plate A is positive with respect to the emitter plate, that is C, the electrons obviously are attracted to it. The emission of electrons causes a flow of electric current in the circuit. The resulting photocurrent. We're in the demo lab with Lonnie, where he set up a photoelectric effect experiment. He has white light impingent on a metal, and the energy of the photoelectrons emitted are shown on the meter at right. If he puts a red filter in the path, now only red photons can strike the metal, and you can see they do not have sufficient energy to eject photoelectrons. If we go to higher energy photons, say go to yellow light, that's shorter wavelength and higher energy photons, they may be able to eject photoelectrons. And indeed, photoelectrons are emitted, but with a relatively small energy. If we go to higher still photon energy, green wavelengths, that's shorter wavelength still, higher photon energies, we can see photoelectrons emitted at a higher energy. Now we can still go to higher energy photons. Blue photons, photons in the blue region, are the highest energy visible photons, and Lonnie has a blue filter that will pass only blue photons. Putting the blue filter in the path shows photoelectrons emitted at the highest energy. So here's an example of the photoelectric effect. 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट से यह बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। किसी सरफेस पर सेकंड जितनी ज़्यादा वेव इंसिडेंट होगी, लाइट की इंटेंसिटी और एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी।
कुछ सालों बाद फिलिप लेनार्ड ने अल्ट्रावायलेट लाइट से गैस के आयोनाइजेशन को डिस्कवर करते हुए ऑब्जर्व किया कि गैस इंसिडेंट होने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, जिसकी एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी पर। लेनार्ड का यह ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल के वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बिल्कुल अपोजिट था, जिससे यह पहेली बन गई कि लाइट की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर या फ्रीक्वेंसी पर। इस पहेली को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट के एक फिनोमिना के जरिए एक्सप्लेन किया, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक के रेडिएशन लॉ की हेल्प ली। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सुझाव दिया था कि लाइट एक कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है, जैसे कि मैक्सवेल ने कहा, बल्कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। आइंस्टाइन ने इन क्वांटम ऑफ लाइट को फोटोन नाम दिया। हर फोटोन एक फिक्स्ड एनर्जी का पैकेट होता है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किसी रेडिएशन की एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और एक बहुत स्मॉल टाइनी नंबर के मल्टीपल के इक्वल होती है, जिसे क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं, और यह स्मॉल नंबर प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने एक मेटल सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करवाया। मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो खुद मेटल सरफेस से बाहर निकल सके। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से कम हो तो उस एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केवल मेटल सरफेस तक ही आ पाता है। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी का कुछ पार्ट सरफेस तक पहुंचने में खर्च कर देता है और बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगते हैं। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है कि फोटोन के पास एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। इससे कम एनर्जी के फोटोन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इस मिनिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो तो सरफेस से इजेक्ट तो होंगे, लेकिन आगे मूव करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचेगी। लेकिन अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन न केवल सरफेस से इजेक्ट होंगे बल्कि एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन की यह एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। When you charge up an electroscope, it can detect static electric charge. It helps you scope it out. There you go. The more charge you put on it, the more deflection. In this case, I'm putting negative charge on it from this balloon. There you go. And I can discharge it just by touching it. This is ultraviolet C, and that is the shortest wavelength of ultraviolet light that we usually use. There actually is a shorter wavelength called ultraviolet V for vacuum ultraviolet, but this one is typical. In fact, this lamp is sold as a germicidal lamp, as in it kills germs. Specifically, it destroys the DNA in the germs. Anyways, now that the scope is charged, I can discharge it with the ultraviolet light. I think that test came back positive. Now you might wonder, is it really the ultraviolet light that's doing it? In my Willemite demonstration, I showed that there's a type of ultraviolet light that's blocked by glass, that's the shortwave, which means that I can prove that it actually is the ultraviolet light if I use glass and prevent it from happening. First, I'll show that the device itself is not discharging it. Nope, nothing. Now I put the glass in front and I shine it and nothing happens. But when I remove the glass, it discharges right away.